ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡ ಜನ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ತೆಲುಗು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಯಿಂದ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಕನ್ನಡಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಡಿಸೈಡೆಡ್, ನಾನು ಹಿಂದಿ ಈಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬೋತ್ ದ ಪೀಪಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಡ and ತೆಲುಗು ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಐ ಹೋಪ್ ಇನ್ ಹಿಂದಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಬಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ನಾನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಯು ಮೀ, सो मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ इनकम टैक्स के बारे में. सी we you know right what is the how processor income tax procedure, how we do that, and how we do e-verification process. Okay, but one thing, see, once we file ITR, we need to do e-verification. Why? If you submit ITR, it won't get processed, it won't reach to our income tax department server. Okay, for this we need to do e-verification, electronic verification. वो इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कैसे होता है कि 3 ऑप्शन में होता है. 1 आधार OTP से होगा, 2 थ्रू बैंक EVC होगा, EVC मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड से होगा, और 3 थ्रू मैनुअल पोस्ट. मीन्स हम लोग CPC बेंगलुरु को एड्रेस को हम डिपार्टमेंट को साइन करके फिजिकल डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके एक्नॉलेजमेंट उन लोगों को भेजना चाहिए. ठीक है, दिस इज़ अ लेट प्रोसेस. ओके, मान लो कि आपका TDS आपका टैक्स फाइल प्रोसेस कब होगा कि जिस दिन आपका e-वेरीफाई कंप्लीट होगा ना, जब से इट विल बी इफेक्टिवली प्रोसेस्ड. ओके, that time it will take. So until unless if you are not you are e-verifying, it won't get processed, it won't reach to in IT department server, income tax database. Okay, so ನಾನು ಈಗ मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि सो e-verification actually we need to do within 120 days from the date of submission of ITR. ओके, देख लो, अब कुछ लेट होगा तो 4 months का टाइम, मीन्स 120 days नथिंग बट 4 months. सो इफ़ इट इज़ लेट आफ्टर यू डन e-verification, सो गवर्नमेंट इट वोंट टेक. उसके लिए हम कंडोलेंस रिक्वेस्ट राइज करना है, दिस माफ़ी मांगते हैं. लाइक द रीज़न आई एम एक पूछना है कि e-verification पता नहीं, यस वी सेंट डिपार्टमेंट को, अगर ड्यू टू टेक्निकल इशू और पोस्ट डिले वो रीच नहीं हुआ, ऐसे रीज़न रख के हम करना चाहिए है. बट वो वैसे करने में भी वो डिपेंड्स और असेसिंग ऑफिसर वो एक्सेप्ट करेंगे तो वैलिड होगा, हमको रिफ़ंड जो भी है आएगा. अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो इनवैलिड हो जाएगा, पता है ना. इसके लिए दिस इज़ वन विच जो भी ऐसे लोग रहते हैं जो हु आर दोस गाइस हु फॉरगेट टू e-verify फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920, असेसमेंट ईयर 2021. ओके, दैट मीन्स फ्रॉम जो भी आपका इनकम 2019 अप्रैल से 2020 मार्च जो भी आपका इनकम हुआ उसका रिटर्न फाइल 2021 में किया था ना, वो रिटर्न किया और यू फॉरगेट टू e-verify. जिस लोगों को अभी गवर्नमेंट ने एक अपडेट दे चुकी है कि इट विल बी एक्सटेंडेड till February 28th 2022. This means what this information tells, right? Here we can do e-verify either through Aadhaar OTP or either through by post and everything. हाँ ना सर, ऐसे ये दिस इज़ द benefit for every person who forget who are stucking their ITR is under still not processed yet. For them it is very useful. So ensure this
opportunity of time opportunity and due is useful for you. Utilize this. Thank you. Thanks for watching video. Bye bye.